The atomic number of atoms is equal of the numbers of protons present in nucleus. So the atomic number is divided by Z, and atomic number is equal number of protons present in nucleus. Now atomic mass को डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय A. atomic mass of an atom is sum of numbers of protons and number of neutrons. So atomic number A equal number of protons and number of neutrons. प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है. सपोज एग्जांपल्स, कार्बन हैव proton 6 and neutron 6. Now we calculate A of carbon. proton 6 plus 6 बराबर 12. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर या एटॉमिक मास